solution of import and export of goods. I think this we had seen, isn't it? देखा है ना ये ट्रांजेक्शन वैल्यू. So am I audible now? Yes, sir. Okay. So we were studying about the transaction value of imported goods and transaction value of exported goods that we had seen in the last lecture. Transaction value means what? The price which is actually paid or payable at the time of getting goods inside from the foreign borders. At that time, some basic value, some ad valorem duties or some additional duties will be charged. Along with this, there are certain values this will be also charged, like for example commission brokerage, that will be added into the transaction values. Then in case of any kind of engineering works which is still pending, so we will add this value. Then design kind of work, then royalties, license fees, and cost of transportation, that is cargo charges. Then insurance amount which uh, we have paid on certain goods and services. Then loading, unloading charges, and handling charges. This will be added into the transaction values. And on the basis of this transaction value, import duty will be charged. So here import duty will be on the basis of your basic value plus additional value. This which is added into your final value. So basic value, that is the basic price, along with some additional cost we will add there, and then we will decide the transaction value. And GST and import duty will be charged on transactional value. Transactional value is nothing but basic value plus additional expenses. We will add those additional expenses in the final value of goods, and by calculating this final value of goods, we apply the import duty as well as GST. Getting this? So this is about the transaction value. So whenever we are going to exchange the goods and services, at that time we need to know the transaction value. Transaction value is the fair value. Along with fair value, we will have certain charges, and these charges are allowed to add into the transaction values. Okay. After that, we had studied some of the penalties for violation of statutory provisions. So whenever we don't obey certain rules and regulations with respect to export of the goods and services, or with respect to import of the goods and services, at that time we were liable to pay the penalty, or we were liable to get the punishment. Because if we do not follow the rules and regulations of import export trades, at that time we will be considered as a done, we will be it will be considered that we have done the offense, any guna. And that's why we have monetary punishment as well as non-monetary punishment. Getting this? So on the basis of these goods and services, the goods may be confiscated. गुड्स का confiscation होता है. इसका मतलब goods में right means what, government of India or the commissioner of this import export will show right, or he will take the possession of that good. Try to understand. Confiscation यानी उसका possession government ले लेगा, या उसका possession कौन लेगा? कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, कमिश्नर ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी मैनेज करता है, उसका कमिश्नर क्या करेगा? उसके ऊपर पोजीशन ले लेगा. Getting this? So at that time we had seen that, so criminal duty, so you will be liable for criminal liability. So criminal liability यानी criminal punishment which will be given by the criminal court of that region. वही जो import and export duty का जो केसेस जो हैंडल करने वाला कोर्ट है, वहां पे अगर आपने लाइबिलिटी, अगर आपने कुछ ऐसा रूल्स या रेगुलेशन में अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किए, तो व्हाट विल हैपन? द क्रिमिनल कोर्ट विल गिव यू सम ऑफ द पेनल्टीज एंड पनिशमेंट दैट यू हैव टू
Getting this? So penalties are imposed on the any person who in relation of goods does or omit to do an act. जब एक्ट फॉलो करते समय एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम लोगों से अगर फॉलो नहीं होते हैं, एट दैट टाइम यू विल बी लायबल टू face the punishment as well as penalty. Hence, it is necessary for first understand goods liable for confiscation. Confiscation यानी possession या right कौन दिखाएगा? गवर्नमेंट और सेंट्रल एक्साइज उसके ऊपर प्रॉपर्टी के उसी प्रॉपर्टी की उसी गुड्स के ऊपर वो क्या करेगा? जब्ती करेगा, यानी कॉन्फिस्केशन दिखाएगा. Goods are liable for confiscation in case of improperly importing goods or improperly attempting to export the goods. यानी we are not, whenever we are importing goods and services, at that time we are not following trade laws or import export laws. At that time goods will be got under confiscation. Getting this? Now first is about criminal penalty. अभी देखिए कि हम लोगों को गुड्स का कंफिस्केशन क्यों होता है? बिकॉज इफ वी आर नॉट फॉलोइंग द import and export goods, import and export rules. So the improper goods किसको बोलते हैं? So improper goods means what? The definition of improper goods is given under section 111 under goods and service under Custom Act 1961. So goods improperly brought in India from a place outside India are liable to confiscation. जो goods improperly अगर हम लोग कैरी कर रहे हैं, goods improperly अगर हम लोग import कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया से बाहर से अगर कुछ goods improperly यानी nothing but without following the rules and regulations of imports or without following the rules and regulations of export, if there are something mismatching in between following the rules and regulations, at that time such kind of goods will be considered under confiscation. Means what? वहां पे कमिश्नर ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, कमिश्नर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या करेगा? उसको जब्त करेगा, यानी कॉन्फिस्केशन करेगा. इसका मतलब पोजेशन ले लेगा. Getting this? Whenever you are carrying the goods or importing goods from outside India. Second, in brief, importing or attempting to import prohibited goods, यानी जो गुड्स के ऊपर बैन है वही गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं. पहला चीज, एक prohibited goods you are importing without following certain process. Second, avoiding the duty payment, यानी you are importing the goods but you are not paying the duties, import duty without paying, यानी हम लोग बोलते हैं ना चोरी करके कुछ, हम अगर हम लोग गुड्स लाते हैं without payment of import duty, if we are bringing or if we are importing goods and services, at that time it is called as improper import. Here what we are doing, we are studying the definition of improper import. Improper import means what? This is not allowed by the commissioner of import export. तो उस कब कौन से सिचुएशन को इम्प्रॉपर इंपोर्ट बोला जाएगा? पहला तो प्रोहिबिटेड गुड्स का इंपोर्ट करना अलाउड नहीं. सेकेंड है ड्यूटी पेमेंट करने के पहले या विदाउट मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी वी आर कैरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. गेटिंग दिस? तो ये भी इम्प्रॉपर गुड्स के नीचे आएगा. देन मिसडिक्लेयरिंग द गुड्स. मिसडिक्लेयरिंग यानी सो we have to declare the specification of the goods. Agar if we mismatch these goods, if we are not declaring the category of goods and we are bringing the goods within India, at that time it is also called as improper imports. As well as violating the rules regarding to movement. तो मूवमेंट के बारे में जो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, if you are not following this and if you have violated these rules and regulations, at that time this also comes under improper imports. Then violating the storage and unloading or use of imported goods. उसका जो रेगुलर प्रोसेस दिया है, if we are not following this process, at that time this comes under violation, and violation is nothing but your improper imports. Will make them liable for confiscation. अगर इसी तरीके से इसी मेथड से कौन से कॉन्फिस्केशन में जाएगा? All improper goods will comes under confiscation.
इम्प्रॉपर गुड्स कब बोलेंगे? अगर प्रोहिबिटेड गुड्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ड्यूटी पेमेंट हम लोग अगर ड्यूटी पेमेंट बिना करके अगर हम लोग लाते हैं, वो भी इम्प्रॉपर गुड में जाएगा। गुड्स का डिक्लेरेशन हम लोगों ने नहीं किया, कैटेगरी अगर डिफाइन नहीं किया तो भी वो इम्प्रॉपर गुड में जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो भी किसके रूल्स रेगुलेशन? मूवमेंट के बारे में, स्टोरेज के बारे में, अनलोडिंग लोडिंग के बारे में अगर हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, एट दैट टाइम दिस विल बी कॉल्ड एज इम्प्रॉपर इंपोर्ट्स, एंड ऑल improper imports comes under confiscation. तो सारे improper imports के ऊपर क्या करेगा? कमिश्नर ऑफ इंपोर्ट वो क्या करेगा? कब्जा लेगा। दिस इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ स्मगलिंग, और ये सारी चीजें इम्प्रॉपर इंपोर्ट्स जो आता है उस सब स्मगलिंग के अंडर आ जाएगा, एंड स्मगलिंग इज द ऑफेंस। Smuggling will charge some penalties. Getting this? Some smuggling will also give you some of custodies as well. So just try to understand the definition of improper imports. This definition is given by under section 111 of Custom Act 1962, in which it is entirely mentioned. So this is something about improper imports, and improper imports are not allowed, and this will comes under for confiscation of goods. Getting this clear everybody? Improper imports किसको बोलते हैं? Yes, understand improper imports? Yes, students. So this is the definition of improper imports. अभी देखिए, the second one definition that we have to study about the prohibited goods. Prohibited goods means what? This is not permitted. Prohibited यानी this is not permitted to import or export. एक्सपोर्ट का भी उसका परमिशन नहीं मिलेगा और इंपोर्ट का भी उसका परमिशन नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं प्रोहिबिटेड. And the definition of prohibited goods is given under section 233 of Custom Act. The definition states that the prohibited goods means any goods, the import or export of which is prohibited under Custom Act or any other law for the time being enforced. जो enforce जो law है उसमें गुड्स जिसको प्रोहिबिटेड गुड्स है, जो गुड्स का नाम प्रोहिबिटेड गुड्स के लिस्ट में आता है, वो सारे गुड्स प्रोहिबिटेड में आता है. मीन्स व्हाट? इट डज नॉट इंक्लूड एनी सच गुड्स in respect of which the conditions subject to which the goods are permitted to be imported or exported का परमिशन नहीं मिलता है, ये सारे गुड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोहिबिटेड गुड्स. Prohibited goods means what? These are the goods which are given under section 33 of Custom Act, and if category of my goods, if it comes under this prohibited goods, at that time it will be not allowed for import as well as export. So the definition of and category of goods. So whenever you are importing the goods and services, whenever you are importing the goods or exporting the goods, at that time as a exporter or as an importer, you have to check that whether your goods is in the category of prohibited or not. अगर हमारे गुड्स प्रोहिबिटेड के कैटेगरी में आते हैं तो एट दैट टाइम यू विल बी चार्ज पेनल्टीज. सो यू हैव टू पे द पेनल्टी एज वेल एज यू हैव टू पे द फाइन. तो यू विल बी क्रिएटिंग ऑफेंस. तो अगर हम लोग एज ए इंपोर्टर कोई भी गुड्स हम लोग अगर इंपोर्ट करते हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू चेक दैट whether these goods is prohibited or not. अगर prohibited नहीं रहेगा तभी हम लोगों को import करना है. Prohibited goods we should not import. Getting this? So this is the definition of prohibited goods. Then improper import हम लोगों ने देखा है. यहाँ पे पहला क्या देखा? Improper import देखा है, prohibited goods and improper export देखा है. The definition of improper export is also given under section 113.
देखिए 111 डेफिनेशन है इम्प्रॉपर इंपोर्ट का, 113 इसमें डेफिनेशन दिया है इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट का। इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इतना ही वर्ड है, गेटिंग इट? तो बाकी वाला डेफिनेशन सेम। तो सी, as per the section 113, goods attempted to be improperly exported are liable for confiscation. उसका पोजेशन गवर्नमेंट ले लेगा, कस्टडी गवर्नमेंट का रहेगा। attempting to export goods in violation of law और misdeclaring the goods, लॉ ब्रेक करके हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या गुड्स डिक्लेयर बिना डिक्लेयर करके हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फॉल्स क्लेम डाल के रूल्स ब्रेक करके। कौन से रूल्स? द रूल्स आर रिगार्डिंग टू मूवमेंट ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द गुड्स। अगर हम लोग ये रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करते हैं एंड विदाउट फॉलोइंग these रूल्स एंड रेगुलेशन, if we are exporting the goods and services, at that time it goes under confiscation under section 113। अगर हम लोग अगर इसी तरीके से कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं बाय रूल्स ब्रेक करके, फॉल्स स्टेटमेंट करके, मिसलीडिंग करके या स्टोरेज या लोडिंग या अनलोडिंग मूवमेंट के रूल्स रेगुलेशन जो डिफाइन किए रहेंगे, अगर वो रूल ब्रेक करके अगर हम लोग गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एट दैट टाइम द गुड्स विल बी लायबल फॉर कंफिस्केशन एंड ऑल दिस गुड्स विल अगेन डिफाइंड एज अ स्मगलिंग। तो उसको क्या बोलेंगे? स्मगलिंग बोलेगा। स्मगलिंग यानी चोरी। एंड अगर चोरी करते हैं, स्मगलिंग करता है, एट दैट टाइम इट विल बी कॉल्ड एज अ ऑफेंस, उसको गुनाह कहा जाएगा और उसके ऊपर आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। So this is the definition of improper exports. We have seen the definition of improper imports, prohibited goods and improper exports. Okay. नेक्स्ट इज द रेट ऑफ पेनल्टी। अगर हम लोग इम्प्रॉपर एक्सपोर्ट किया, प्रोहिबिटेड गुड्स किया या इम्प्रॉपर इंपोर्ट किया तो हम लोगों को पनिशमेंट तो लग जाएगी, दैट इज द क्रिमिनल पनिशमेंट लग जाएगा। तो रेट ऑफ पेनल्टी कितना होती है? रेट ऑफ पेनल्टी, अभी पेनल्टी कितना पड़ती है, पेनल्टी कितना होता है? जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड बिकॉज दीज आर द फिगर्स। गो थ्रू दिस स्लाइड देन वी विल एक्सप्लेन। इम्प्रॉपर इंपोर्ट्स का क्या है? Rates of duty for improper imports. Then we have also refund of custom duty, refund of export duty. So see here, in case of improper imports, just go through this slide. Yes, sir. Yes, then we will discuss. Just go through first, just go through this, then we will discuss.
डन। Okay, now see yaar, so what will be the rate of penalty that I have to pay if I'm importing goods and services, and if I'm not following the rules and regulation, if I'm creating the offense, at that time मुझे कितना amount भरना पड़ेगा? So this is also given under Custom Act 1962. तो पहला चीज ये देखिए, अगर हम लोग प्रोहिबिटेड गुड्स ला रहे हैं या नहीं ला रहे, अगर गुड्स प्रोहिबिटेड है तो उसके लिए अलग रूल्स है, गुड्स नॉन प्रोहिबिटेड रहे तो उसके लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन। नाउ सी हियर, सो लेट अस सी अबाउट द इम्प्रॉपर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट कर रहे हैं यानी गुड्स अंदर ला रहे हैं, कंट्री में ला रहे हैं, गेटिंग दिस? एट दैट टाइम व्हाट आर द रूल्स? सो फर्स्ट इज, if we are coming under the category of improper goods means what? We are not following the rules and regulations, कुछ तो गड़बड़ है। in that case, अगर हम लोग प्रोहिबिटेड गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, प्रोहिबिटेड में यानी जिस गुड्स को परमिशन नहीं है तभी भी जाके हम लोग अलाउ करते हैं, यानी कैरी करते हैं। if we are carrying prohibited goods, प्रोहिबिटेड गुड्स अगर हम लोग कैरी करते हैं तो इसको स्मगलिंग बोलते हैं। तो उसका ड्यूटी कितना लगेगा, उसका पेनल्टी कितना लगेगा? अगर हम लोग प्रोहिबिटेड गुड्स अगर इंपोर्ट करते हैं, एट दैट टाइम देयर आर टू वैल्यूज। फर्स्ट इज द नॉट एक्सीडिंग, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है? फॉर एग्जांपल 50,000 है और ₹5,000, विच एवर इज द ग्रेटर। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा है, आई एम कैरिंग, for example, I am carrying the tobacco product from China and whose value is 50,000, getting this? तो उसकी वैल्यू है 50,000 और 5,000, whichever is the greater। तो मुझे कितना ड्यूटी लगेगी? 50,000 का या 5 लाख का मेरा प्रोडक्ट का वैल्यूएशन है और गवर्नमेंट ने बोला है 50,000, 500 रुपए, सॉरी 5,000, 5 lakhs or 5,000, whichever is the greater, this will be my penalty। तो कितना लगेगा? आई एम वैल्यूएशन। तो कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, जो कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड रहेगा उसका पहले वैल्यूएशन करेगा। तो वैल्यूएशन यानी कस्टम ऑफिसर करेगा, आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी बिल लिस्ट ऑफ जो बिल रहेगा वो नहीं है, इनवॉइस नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग स्मगलिंग, उसका आपके पास बिल नहीं रहेगा। प्रोहिबिटेड गुड से इसका मतलब उसका कोई भी ड्यूटी, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। मींस व्हाट? यू डोंट हैव इट्स बिल। तो इसका बिल कैलकुलेशन, उसका वैल्यूएशन कौन कैलकुलेट करेगा? कस्टम ऑफिसर विल कैलकुलेट इट्स बिल और इट्स वैल्यू। और वो वैल्यू कैसे वो कैलकुलेट करेगा? फॉर एग्जांपल उसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू कितना है, कितना किलोग्राम है और उसका मार्केट रेट क्या है, वो उसको हर रोज पता होता है। तो उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस है और गवर्नमेंट क्या बोलता है? 5,000 और 5 लाख, विच एवर इज द ग्रेटर। तो एट दैट टाइम हाउ मच पेनल्टी ही हैज बीन चार्ज? कितना चार्ज लगेगा? एक्चुअल वैल्यू 5 लाख है और गवर्नमेंट बोल रहा है 5,000। तो 5 लाख और 5 लाख में से जितना भी हायर अमाउंट रहेगी दैट विल बी योर पेनल्टी। तो कितना रहेगा इन दैट केस? टेल मी। Yes, students, are you getting what I am saying, what I am teaching you? What will be the penalty to me if I am carrying this kind of prohibited goods? So value of good is 5 lakh and government क्या बोल रहा है? 5 लाख। वैल्यू ऑफ गुड्स और 5,000, whichever is greater. In this first case, value of good is 5 lakh, that's why 5 lakh will be the penalty. जितने भी वैल्यू रहेगी उतनी ही आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। गेटिंग दिस? सेकेंड एग्जाम्पल, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स इज 3,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, विच एवर इज द ग्रेटर आया, तो गुड्स की वैल्यू 3,000 रुपये है और आप लोग का मैक्सिमम पेनल्टी 5,000 है। 3 और 5 में हायर कितना रहेगा? 5,000। एट दैट टाइम दैट इनकम टैक्स, दैट कस्टम ड्यूटी
custom department where I have to pay 5,000. If the value of good is less than 5,000, at that time you have to pay 5,000. And if the value of good is greater than 5,000, at that time you have to pay the actual value. That is for prohibited goods. Clear, everybody? Tell me. Don't waste our time. Yes. Are you listening me? Why you people are not replying me? See, these are the technical terms. I can't understand whether you are getting or not. That's why I'm asking you questions. I assume that you are just understanding. I'll go ahead because I don't want it to spend much more time. सेकंड क्या है? पहला चीज है प्रोहिबिटेड गुड्स का. प्रोहिबिटेड गुड्स का पेनल्टी ध्यान में आ गया. क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स और 5,000 विच एवर इज द ग्रेटर, दिस विल बी योर पेनल्टी. सेकंड क्या है? इफ यू आर कैरिंग नॉट प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी जिसको प्रोहिबिशन नहीं डाला है, दिस गुड्स आर अलाउड टू कैरी, दिस गुड्स आर अलाउड टू इंपोर्ट. एट दैट टाइम क्या है? देखिए, द ड्यूटी सॉट टू बी इवेडेड. इवेडेड यानी इविजन, टैक्स इविजन करते हैं. इवेजन यानी लपोने बोलते हैं, हाइड करते हैं. कितना अमाउंट आपने इवेड किया है, कितना अमाउंट आपने क्या बोलते हैं उसको, हाइड किया है, तो वो अमाउंट बोलते हैं द नॉट एक्सीडिंग द ड्यूटी सॉट टू बी इवेडेड. कितने अमाउंट का ड्यूटी आपने हाइड किया है. इन केस ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स which are not prohibited goods or rupees 5,000, whichever is the greater. जितने अमाउंट का टैक्स आपने हाइड किया है या 5,000, whichever is the greater. अगर आपने 3,000 का टैक्स इवेड किया रहेगा और 5,000, तो इसमें से 5,000 मुझे टैक्स लगेगी. अगर आपने 50,000 का टैक्स इवेड किया है और 5,000, तो इन दैट केस 50,000 विल बी योर पेनल्टी. ओके, सो दिस इज for in case of permissible goods, that is called as a not prohibited goods. See, if actual value is higher than the value declared by in the bills, so value in this case what will happen, हम लोग क्या करते हैं, कस्टम ड्यूटी पेमेंट करते समय उसका वैल्यूएशन कम दिखाएंगे. अगर वैल्यूएशन कम दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे क्या भरना पड़ेगा, कम इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, कम से कम इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज, लेस ड्यूटी मुझे पेमेंट करना पड़ेगा. इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टैक्स इवेजन यानी टैक्स का चोरी करना, टैक्स हाइड करना. टैक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड करते हैं, स्किप करते हैं. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स कम दिखाएंगे. जितना भी अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन कम दिखाएंगे उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, उसका ड्यूटी, मुझे कस्टम ड्यूटी कम पेमेंट करना पड़ेगा. So in that case, if this is the situation, at that time what will happen, the actual value will be calculated, and this if actual value of this product will be calculated, actual value of goods will be calculated, and if this actual value is higher than the value declared in the bills, बिल कुछ अलग अमाउंट का है और एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग अमाउंट का आ रहा है, कौन कैलकुलेट करेगा एक्चुअल वैल्यू, कमिश्नर ऑफ एक्साइज और कमिश्नर ऑफ कस्टम कैलकुलेशन करेगा. अगर उसको ये लगता है कि उसका एक्चुअल बिल कुछ अलग अमाउंट का है और एक्चुअल वैल्यू कुछ अलग आती है, एट दैट टाइम बिल ऑफ एंट्री अलग बनाइए है. और डिक्लेरेशन ऑफ कंटेंट्स ऑफ बैगेजेस नॉट एक्सीडिंग द डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड डिक्लेयर्ड वैल्यू और ₹5,000 whichever is greater. यानी एक्चुअल वैल्यू और डिक्लेयर वैल्यू में जितना भी फर्क है, फॉर एग्जांपल दिस अमाउंट इज 70,000 and 5,000, whichever is greater, 70,000. difference between actual value and declared value is 70,000. for example, गुड्स का बिल बनाया है फॉर एग्जांपल 1,50,000 का और एक्चुअल वैल्यूएशन कैलकुलेट किया कमिश्नर ने, वो हो रहा है 2,70,000 का. तो 2,20,000 2,20,000 minus 1,50,000, that is amounting to 70,000. So 70,000 is the difference.
So difference or 5,000 whichever is the greater. तो difference कितना आ रहा है 70,000 का आ गया तो 70,000 will be my penalty. Try to understand this. Third case is if the goods are prohibited and the value is misdeclared. यानी डिक्लेयर नहीं किए, goods prohibited है and value is misdeclared. बिल बनाया है उसका लेकिन गलत बनाया है. Penalty not exceeding the value of goods or the difference between actual value and declared value or 5,000 is the. तो डिफरेंस में से जो डिफरेंस अगर ज्यादा रहेगा 5,000 से तो डिफरेंस आई हैव टू पे एज अ पेनल्टी, और अगर डिफरेंस लेस देन 5,000 रहेगा तो 5,000 अमाउंट आई हैव टू पे. मींस हायर अमाउंट इज द 5,000. The next is the minimum amount is the amount of penalty is 5,000. Third, if goods are not prohibited but duty is sought to be evaded and the value is misdeclared, value जो बिल बनाया है वो गलत बनाया है, at that time penalty not exceeding the duty sought to be evaded or the difference between actual value and declared value or amount of 5,000 whichever is higher. उसमें से जितना ज्यादा अमाउंट रहेगी ये मेरा पेनल्टी बन जाए. So you can see in each case minimum penalty is 5,000. हर एक केस में मिनिमम पेनल्टी कितना बन रही है 5,000 बन रही है. Reading this. So more than this, if the valuation of goods is more than this, that time I have to pay more amount of as a penalty. अगर valuation of goods or amount of difference between the valuation, if it is less than 5,000, at that time you have to pay 5,000 as a penalty. So 5,000 is the minimum amount that you have to pay during this improper goods. So this is the rate of penalty. Then next is the refund of the custom duty. Just go through this slide. We refund of custom on refund of import and refund of export. Then we will discuss. Just first go through this entire technical terms. Then we will discuss. Okay. Now see here, refund of custom duty. Custom duty का refund यानी मैं I have already paid the duties in case of exports or in case of imports, but now I will get its a refund as well. तो हम लोग रिफंड कैसे मिलते हैं देखिए. So refund of export duty is जीरो रेटेड है. जीरो रेटेड यानी जितना भी मैं भरूंगा, जितना भी वो पेमेंट करूंगा वो फिर मुझे मिल जाएगा. This will be in the form of refund. Now
Under section 26 of Custom Act 1962 prescribe the provision for the refund of export duty. Export duty refund करने का provision बनाया है. And 26 is related to refund of export duty and 26A is for refund of import duty के लिए अलग-अलग section है. So there is a separate provision for refund for imports and refund for imports. So by these laws, by these sections, I can claim for the refund. Okay. In certain cases, 27 section of Custom Act 1962 prescribe the claim for refund of duty in case of excess payment made for on the importation. Import करते समय अगर मेरे से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कुछ अगर कमिश्नर ऑफ एक्साइज या कमिश्नर ऑफ इंपोर्ट अगर लेता है तो at that time I will also get the refund under section 27. अगर इंपोर्ट के बारे में इंपोर्ट के टाइम पे अगर मेरा कुछ एक्स्ट्रा टैक्स जाती है, एक्स्ट्रा ड्यूटी जाती है, that time I can claim it for refund. Try to understand section number 27. See, in case of multiple choice question, this question will be asked. Now, A is for refund of export duty in certain cases. Export duty का refund कब कब होता है? देखिए, where the exportation of any goods or any duty has been paid, such duty shall be refunded to a person by whom or to on whose behalf it was paid. किसने पे किया था या किसके behalf पे किसी ने पे किया रहेगा, उसको क्या मिलेगा? रिफंड मिलेगा. पहला number 1 is the goods are returned to such person otherwise than the way of resale. The goods resell होके उसके ही पास अगर आता है, at that time the duty will be returned. मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया था और उसके बाद इंपोर्ट होके फिर एक बार रीसेल हो रहा है गुड्स का, एट दैट टाइम द इंपोर्ट ड्यूटी विल बी रिटर्न. सेकेंड, द गुड्स आर रीइंपोर्टेड विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन. आज अगर मैंने एक्सपोर्ट किया था तो उसको फिर एक बार 1 साल के अंदर हम लोग अगर उसको इंपोर्ट करते हैं, आज एक्सपोर्ट किया, वही गुड्स हम लोग फिर एक बार इंपोर्ट करने के लिए जाते हैं, एट दैट टाइम we will be get the refund of export duty which is already paid. Third situation है, an application for refund for such duty is made before expiry of 6 months from the date. तो application refund का application 6 महीने में जाना चाहिए. Getting this? So if we are making the application for refund within 6 months from the date on which proper officer makes an order for the clearance of the goods. जिस डेट को प्रॉपर ऑफिसर ने गुड्स क्लियर किए रहेंगे, ओके, गुड्स क्लियर यानी इट हैज बीन अलाउड, गुड्स आर हैज बीन अलाउड फॉर द क्लियरेंस. उसके 6 महीने में अगर आप रिफंड का क्लेम करते हैं, एट दैट टाइम यू विल गेट द रिफंड ऑफ द कस्टम एक्सपोर्ट ड्यूटी. So these are the 3 laws. फर्स्ट क्या होना चाहिए? The goods are returned to such person otherwise by the way of resale. Resale होके अगर गुड्स जाते हैं, एट दैट टाइम यू गेट द रिफंड. रीइंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया हुआ गुड्स फिर एक बार वापस आया तो एक उसमें आपका रिफंड मिल जाएगा. और तीसरा चीज क्या है? क्लियरेंस के बाद 6 महीने में आपने रिफंड का एप्लीकेशन डालना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, इफ द प्रोडक्ट कम्स अंडर रिफंड कैटेगरी. The next is the refund of import duty in certain cases. Here, where an importation of goods capable of being easily identified as a imported goods. तो goods हम लोग जो कुछ import करेंगे, okay, so importation of any goods capable of being easily identified as such imported goods, any duty has been paid on clearance. जो ड्यूटी क्लियर करते समय, गुड्स अंदर लेते समय, फॉरेन बॉर्डर से हम लोग अंदर जब गुड्स लेंगे, एट दैट टाइम क्लियरेंस के टाइम पे जितना भी ड्यूटी पे किया रहेगा, एनी ड्यूटी हैज बीन पेड ऑन द क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फॉर होम कंजम्पशन. इसलिए हम लोग यूज करें, वी आर नॉट डीलिंग विद दिस फॉर ट्रेड, वी आर यूजिंग दिस फॉर होम कंजम्पशन. खुद के लिए घर में यूटिलाइज कर रहे हैं. Such duty shall be refunded to the person by whom or
on whose behalf it was paid. अगर हम लोग गुड्स ट्रेडिंग के लिए नहीं ला रहे, यहाँ पे ये गुड्स लाके बिजनेस नहीं कर रहे, we are utilizing these goods for our own personal use at that time, for home purpose, home consumption के लिए अगर goods and services लाते हैं, and वो goods and services clear करते समय अगर हम लोगों ने import duty कुछ पे किया रहेगा, at that time this import duty will go for applicable for the refund. किसको मिलेगा? जिसने import duty भी भरा रहेगा या जो claim कर रहा होगा उसको वो मिलेगा. Second, the goods are found to be defective or otherwise not in the conformity with the specification agreed. एक तो import किए हुए goods अगर defective रहेंगे, at that time also you can apply for the refund, और आप लोगों ने उसका specification अगर गलत डाला रहे, at that time by the supplier or by the person who is supplying the goods, so in that case you will apply for the refund of the duties. Third thing, the goods are identified to the satisfaction to the assistant commissioner of custom or the deputy commissioner of custom as a goods which were imported. So the commissioner of this custom or the deputy commissioner of custom, he should be satisfied with this import of the goods. अगर उसने परमिशन दे दिया, if he is convinced, then you will get the refund, otherwise you will not get the refund. Third thing is that the improper does not claim drawback under any of the provision of this act. Improper को drawback ऐसे consider नहीं किया जाएगा. Improper यानी improper. Getting this? So this is something about improper goods के ऊपर का ड्यूटी आपको माफ नहीं होगा, रिफंड नहीं मिलेगा. Improper छोड़ के बाकी वाले goods के ऊपर आपको रिफंड मिलेगा. Getting this? So this is something about refund of import or export, refund of import duty and refund of export duty. Okay, students, in this way we have finished entire syllabus. In this way we have finished entire syllabus of your indirect taxation. If you have any kind of doubts, then you can ask me, otherwise we will declare our syllabus. In case of any doubt, you are free to ask me right now. Since tomorrow there will be no lectures. If you want to ask any queries, any question, any doubt, you can ask me right now. Otherwise we will clear out. Yes. Have any doubt? Yes. Notes तो मैं ये पीपीटी आपको मुझे व्हाट्सएप पे हाई कीजिए, मैं आपको नोट्स पीपीटी भेज दूंगा. हाँ, और आपके अगर वर्ड्स में नोट्स चाहिए तो मुझे ईमेल आईडी भी भेज दीजिए, मैं वर्ड्स का भी नोट्स आपको भेज दूंगा. कोई एक मुझे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भेज दीजिए, आई विल सेंड यू नोट्स. ठीक है, और कुछ क्वेरी, कुछ डाउट्स 5 यूनिट में से नोट्स तो मैं दे दूंगा. Yes, students. Anybody wanted to ask the question? In spite of chatting, you can directly ask me question. Don't chat. You can directly ask me question. You can ask the questions, queries, or whatever it may be. You are free to ask the questions. Yes. Should we stop here? Yes, sir. Send me your email ID on WhatsApp. My number is also with you, na? If you don't have my number, just take my number 73. Take my number 73 855 77 945. I will repeat again 73 855 77 945.
Just WhatsApp me. Just send me hi on WhatsApp. I will share my notes to you. तर तुम्हाला पिंग Okay. केलंय बघा. क्या बोले? चॅट मध्ये तुम्हाला टाकलंय मेल आयडी. चॅट मध्ये नका टाकू. सेशन बंद झालं की ते निघून जात आहे. व्हॉट्सअप करा. माझा नंबर मिळाला तुम्हाला. ओके सर. ठीक आहे. ईमेल आयडी आणि तुमचा मोबाईल नंबर मला चॅट करा. मी व्हॉट्सअप वरती टाका. मी तुम्हाला नोट्स पाठवतो. So in this way we have finished this entire syllabus. In case of any doubt, you can ask me anytime, or if I have not received your call, just drop me message. I will call you back. Getting this? I will send you PPTs as well as study notes as well. Okay. So should we stop here? Should we stop? So thank you so much and all the best for your exams and all the best for your placement as well. Thank you so much once again.